Good morning, students. Today's topic of presentation is general principles of periodontal surgery. So, first of all, I would like to tell you that what will be the content of this topic, general principles of periodontal surgery. First of all, whatever patients are coming to our OPD, outpatient surgery, for that, what will be the protocol? How are we going to prepare the patient? What are various emergency equipment? What are the measures to prevent transmission of infection, sedation and anesthesia? How we manage the tissue? How do we do the scaling root planing, hemostasis, periodontal dressings, post-operative instructions, and it will be then followed by other aspects and conclusion. So why the principles of periodontal surgery are important? Because whenever we are going to do any kind of surgery, it's not only the periodontal surgery, any kind of surgery, uh, we have to divide it into three parts. One is the pre-surgical, another is the during the time of surgery, and third part is the post-surgical. So before surgery, we have to plan everything. All surgical procedures must be carefully planned. Patient should be adequately prepared medically, psychologically, and mentally. So if the patient is prepared this way, and preparation of the patient and general consideration pre, during, and post surgery. So, this is the idea behind this topic, uh, general principles of periodontal surgery. So, what all will come under this? If the patient is coming, this is now we are coming to planning part before the surgery. If patient has come to us, we will re-evaluate the patient after phase 1 therapy. All of you might be aware of what is phase 1 therapy. Before every periodontal surgery, we do scaling and root planing of the patient, and we give some time to heal. So if the lesion heals completely, there will be no need of surgery. But if we do the re-probing, re-examining all the pertinent findings that previously indicated the need of surgical procedures, if they are existing, persistence of those findings confirm the indication of surgery. Then we will think about the number of surgical procedure, कितने procedures करने होंगे, what will be the expected outcome of the procedure, and what will be the various post-operative care necessary. So this all has to be decided prior to the surgery. This has to be discussed with the patient, and then we will make a decision. So these are all things which is re-evaluation after phase 1 therapy. Sometimes if the pocket has reduced from 7 millimeter to 5 millimeter, we need not to do any surgery. But if this pocket is reduced to 6 millimeter, means reduced by 1 millimeter, then we know that critical probing depth is approximately 5 millimeter. तो 5 मिलीमीटर से अगर कम हो गई डेप्थ तो हम सर्जरी नहीं करेंगे, और 5 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई रह गई तो हमें सर्जरी करनी है. अब हम सिंपल फ्लैप सर्जरी करेंगे, हम अपाइकली प्लेस्ड सर्जरी करेंगे, कोरोनरी एडवांस सर्जरी करेंगे, ये सब हमें टाइप ऑफ सर्जरी देखने हैं. इस प्रोसीजर को करने से हमारी जो प्रोग्नोसिस है, अगर हमारी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है तो हमें सर्जरी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें हम इस समय डिस्कस करते हैं और वी गिव अ थॉट. नाउ वी हैव टू डू द सर्जरी. अब आप पेशेंट को जब बुलाते हो तो पेशेंट को प्रिपेयर कैसे करते हो? आपने फेज 1 थेरेपी कर रखी है. अब प्री मेडिकेशंस में एंटीबायोटिक्स आर गिवन बिफोर सर्जरी and continued for 4 to 7 days after surgery. 1 day prior to the surgery, we give antibiotic or we start it on the day of surgery. दोनों तरह से कर सकते हैं. There is little bit of controversy regarding giving of the antibiotics. Some of the researchers have said that there is no use of giving any antibiotic in such type of surgical procedure, and there are researchers who say that it enhances the healing capacity or it enhances the outcome of the procedure. So to be on the safer side, we prescribe antibiotics. We do not want to take any chance, so we prescribe antibiotics.
Then prophylactic use of antibiotics in otherwise healthy subject is given for bone grafting procedures and implant. अगर पेशेंट को सिस्टमिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कौन कौन सी केसेस है जिसमें हमको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देना ही चाहिए। वो हो गया हमारे ग्राफ्ट प्रोसीजर्स, हमारा इम्प्लांट केसेस। इन केसेस में हमें प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज वी आर पुटिंग सम आउटसाइड मटेरियल इनसाइड द ओरल कैविटी। तो वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स भी होता है, दे कैन बी अ कैरियर ऑफ इन्फेक्शन, सो वी गिव प्रिफरेबली प्रोफिलेक्टिक यूज ऐसे केसेस में जरूर कर देना चाहिए। देन NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, that has to be given 1 hour prior to surgery, as well as 0.12% of chlorhexidine gluconate mouthwash as a pre-rinse has to be given to the patient. They have their own significance. NSAIDs, when they are given, patient is more comfortable. When you are giving local anesthesia, patient does not feel that much of the pain, and immediately after surgery, you do not have to immediately give a anti-inflammatory or a painkiller. So this take care for the patient for next 6 to 8 hours. So NSAID is 1 hour before surgery should be given. And those patient precaution has to be taken with medically compromised patients like rheumatic fever, cardiovascular problem. The rheumatic fever, again, that is an infectious thing. Here we have to give the drug antibiotic prophylactically. Now here the patient is systemically compromised. Cardiovascular problems means if patient has undergone some prosthetic replacement, some valve replacement, or a patient is suffering from endobacterial acute endocarditis. In those cases, we should give prophylactically 1 gram of amoxicillin that has to be given 1 to 2 hours prior to the surgery. One more pre-medication is given. The detail I will be taking in next few slides. Sedative should be given a night before the surgery because patient is anxious, anxiety is there, fear, apprehension. These things are there. So to allay the fear, we prescribe some anxiolytics. तो वो अब कहाँ कैसे देना है वो थोड़ा सा हम देख लेंगे, बाद की स्लाइड्स में आएगा। देन स्मोकिंग पेशेंट की हिस्ट्री जरूर ले लेनी चाहिए। पेशेंट को आपको स्मोकिंग क्विट कराना है सर्जरी के पहले, और इट शुड कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 1 month because it has been proven and there is no doubt about it that smoking delays or prevents healing and it complicates the surgical procedure. Our surgery can be a failure, especially in the cases of implant. Implant is sure going to fail if the patient keeps on smoking. Patient unwilling to follow this advice should be treated preferably non-surgically, or it should be a big no-no. No surgery if the patient is smoker and is not preferring to quit smoking. Informed consent is one thing where patients should be informed about the diagnosis, prognosis, and different possible treatments with the expected outcome and the pros and cons at the time of surgery. Inform again verbally and in writing, take their agreement to undergo the procedure by signing the consent form. Patients should be very thoroughly and very well explained because we are here to treat them and help them out. We have to explain that if whatever is the patient's need, we have to understand the patient's need, and then we have to explain that this is the procedure that we are going to do, and we are going to get 80% of the result, 70% of success, or 90% or 100% success. 100% success we never say to a patient. There is all that is the reason when we take an informed consent. There is always a margin of 10% where we are not very sure. So that the procedure has to be explained to the patient. If the patient is not able to understand, explain it to the attendant who had come along, or the accompanying person who had come, and then it should be given there in the writing also, and then you have to take the signature of the patient on that, that yes, patient is agreeing for that, this is required by the law. Then we should be well prepared with the emergency equipment because sometimes it may happen that patient, the most common emergency is syncope where the transient loss of consciousness is there, which is caused by the reduction in blood flow to the, especially to the brain. It most commonly occurs due to fear and anxiety.
Whenever it occurs, it is preceded by a feeling of weakness, followed by pallor, sweating, coldness of the extremities, dizziness, slowing of the pulse. If this is happening, you have to identify that the patient is undergoing syncope. Immediately place the patient in a supine position with legs elevated. Tight clothes should be loosened. Wide open airway should be established. You have to make the patient comfortable. If necessary, if the patient is not able, within 2 to 3 minutes, few minutes, the patient will regain the consciousness. But if you feel that patient is not able to breathe properly, you can administer oxygen to the patient. And always before going for any procedure, even by the view of local anesthesia or the syringe or needle, patients sometimes they become unconscious or they undergo some syncope. I have seen a case where we were treating the husband, the wife was standing in front of the husband, and we were looking um, the expressions of the patient, whereas his wife, she became unconscious and she fell down, she underwent symptom. So sometimes such type of things happen, so we have to be careful. We have to allay the fear and anxiety. We have to keep on asking the patient about or telling them something from where the patient has come. You make the patient comfortable whenever you are doing, and that is the reason we have to take the history of syncope. Whether the patient has some time back had undergone some type of syncope, so that if we come to know, so we can counsel the patient, we can ask the patient to come with some anti-anxiety can be given to the patient so the patient is comfortable and doesn't undergo syncope. If the patient is undergone syncope, wait for 2 3 minutes, revert back हो जाता है. Patient से पूछो, are you comfortable? अगर patient comfortable है, proceed with the surgery. अगर नहीं comfortable है, you can give the next appointment. Then measures to prevent transmission of infection. When we are working on the dental chair, chances of infection transmission to the patient, to the dentist is always there. So in current scenario of COVID, the SARS-CoV-2 infection, we have to be very careful. HIV was also there, hepatitis is also there, tuberculosis patients are there. So we have to be very careful regarding the transmission. Whether neither we should get infected, nor from me the patient should get infected, or neither there should be cross contamination that from one patient to another patient. हमने काम किया, हमने डेंटल चेयर यूनिट को सबको यूज किया, उसके बाद उसी चेयर पे दूसरे पेशेंट को बिठाया, वहीं पे हमने कहीं हाथ लगाया और we are transmitting that infection to the third patient. So this is known as cross contamination. For this, what all the procedure that we have to take? Universal precaution. यूनिवर्सल प्रिकॉशन हमेशा लेना है. इसमें एक प्रोटेक्टिव अटायर होता है, एग्जैक्टली नॉट लाइक अ पीपीई किट, बट वी हैव टू ड्रेप आवरसेल्फ, वी हैव टू ड्रेप द क्लोथ, वी हैव टू पुट properly mask should be there, sterile glove should be there, and protective eyewear should be there, and a head cap should be there. So we have protected ourselves with proper equipment, and when we are working, all the surfaces that may possibly be contaminated by blood or saliva that cannot be sterilized, like light handle, unit syringes, etc., must be covered with aluminum foil or plastic wrap. आप उसके ऊपर एक aluminum foil wrap कर दीजिए या plastic wrap. So, हमने light handle पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है. आपने सारा procedure कर लिया. After the procedure, just pull it out, throw it in the dustbin wherever it has to be disposed. Remove it and the unit is sterile as it was earlier. Or we can do a chemical sterilization. We have to scrub those areas thoroughly and with properly, and try to minimize the aerosol production. Aerosol producing devices should not be used in patients of suspected infections, and their use should be kept at minimum in all other patients. So in this type of COVID, we have preferred using hand instruments. That is why we always teach the student about the hand instrumentation and scaling, because in such type of cases, a crisis time of pandemic and all those things, where the infection will be transmitted through the oral cavity, through the nasal cavity. So aerosol production should be kept to a minimum and hand scaling should be preferred. Hand instrumentation should be preferred. After this, when we will be treating other patients, if the patient is suffering from tuberculosis, try to
send the patient to a physician for the proper medication treatment. If the patient is undergoing treatment and has already taken a course of 1 month or 2 months, so then the patient is not that much of carrier, but still we have to take precaution, take properly protective wear, universal protection along with the um, protection. You can go ahead with the surgical procedure or aerosol protection. Nothing will, but this aerosol you are protected, but the other areas can get contaminated. So we have to take care of the our OTs also. Special care while using the sharps like blades and needles, they should be properly disposed. Needles should be burned, destroyed, and then disposed. Similarly, the blades that has to be taken care of. Sedation, as I told you, sedation and anesthesia. This part will be taken. Local anesthesia. The procedure should be as painless as possible. We should not give pain to the patient while performing the surgery. So the best thing is the local anesthesia. We have to give either we will give regional block, local infiltration, or injecting directly into the interdental papilla. So this is the 2 3 means we give the nerve block if possible. Otherwise, it is local infiltration or injecting directly at the site of surgery. Whatever is the case, that has to be decided. Patient's medical history and history of allergy should be assessed before local anesthesia. For that, subdermal injection is given to see any allergic response from the local anesthesia, or if patient is giving some history that patient has suffered from some allergic response. So otherwise, the local anesthesia is not contraindicated in many of the cases. If the patient is having, patient is taking antihypertensive, then we have to be careful. Epinephrine on all those vasoconstrictors should not be used, or if they are being used, it should be 1 is to in the ratio of 1 is to 80,000 or 1 is to 2 lakh also. That is there. That can be very easily given to the hypertensive patients also. सो लिग्नोकेन HCl विदाउट एपिनेफ्रीन उसकी मैक्सिमम डोज क्या हो सकती है? इट इज 4.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट. अगर हम इसको जनरल वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो 15 ml हम मैक्सिमम विदाउट एपिनेफ्रीन हम दे सकते हैं पेशेंट को. 15 ml. एक सिरिंज हमारी 5 ml की आती है, एक 3 ml की आती है. अगर 5 ml की है तो आप मैक्सिमम 3 सिरिंजेस से ज्यादा नहीं दे सकते हो. अगर कार्ट्रिज के फॉर्म में तो 7 कार्ट्रिजेस आप दे सकते हो. अगर इट इज विद एपिनेफ्रीन तो उस केस में हम थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं. मतलब मैक्सिमम लिमिट जो परमिसिबल लिमिट है वो 25 ml की, इतनी की जरूरत नहीं पड़ती है. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग फॉर द कन्वीनियंस. अब एप्रीहेंशन एंड न्यूरोटिक पेशेंट, अगर एप्रीहेंसिव या न्यूरोटिक पेशेंट है तो इनको हमें एंटी एंजाइटी, सेडेटिव या हिप्नोटिक्स देने होते हैं. इसको हम 3 रूट 4 रूट से दे सकते हैं. हम ओरली दे सकते हैं, पेशेंट गोली खा सकता है. इनहेलेशनल दे सकते हैं, हम जो सुंघाते हैं कॉन्शियस सेडेशन या इनहेलेशनल एनेस्थीसिया कहते हैं. पेशेंट को आप आईएम दे सकते हो या पेशेंट को आईवी दे सकते हो. ये 4 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं. स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं, कितना सेडेशन चाहिए इस या कितने ड्यूरेशन के लिए हम प्रोसीजर करना है, या पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फिजिकल इमोशनल स्टेटस कैसा क्या है, उस पर डिसाइड होगा कि हम कौन से टाइप का सेडेशन देंगे. अगर पेशेंट माइल्ड एंजाइटी है तो इसका सिंपलेस्ट या लीस्ट इन्वेजिव मेथड है नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनहेलेशन. इस केस में इसी को कॉन्शियस सेडेशन करते हैं. इसका पूरा चैप्टर एक है, वो आपको तो अलग से क्लास में पढ़ाया जाएगा. व्हाट इज कॉन्शियस सेडेशन. इसका एडवांटेज ये है कि कोई कॉन्सेप्ट है, एबिलिटी टू एडजस्ट सेडेशन थ्रू आउट द प्रोसीजर. इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है, कॉन्शियस रहता है, लेकिन उसको एंजाइटी नहीं रहती है. इसमें रैपिड रिकवरी है. जैसे ही आपने उसको हटाया पेशेंट को, तुरंत वो वापस रिवर्ट बैक कर जाता है, नॉर्मल हो जाएगा एकदम. और हमें जब भी हम जैसे एनेस्थीसिया भी अगर हमने दिया है तो क्या होता है, सेंसरी या हमने कोई ओरली दिया है तो जो इसके सेंसरी या मोटर नर्व्स होते हैं वो देर तक इम्पेयर रहते हैं. इस केस में आपने जैसे ही उसको हटाया वैसे ही उसकी नॉर्मल हो जाती है ये सब सेंसरी. आपका लिप का मूवमेंट, आपके टंग के मूवमेंट, हाथ के मूवमेंट, आंखों के मूवमेंट, सब तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं. बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि डिजायर्ड इफेक्ट इज नॉट अचीव्ड इन मेडिकली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल एज दिस सेडेशन नीड्स सम लेवल ऑफ पेशेंट कॉपरेशन.
Overall, inhalational sedation is safe, effective, and reliable mean of reducing mild anxiety. Okay. माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी अगर है तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेंजोडाइजेपीन्स दिया जाता है. इट इज मोर इफेक्टिव देन इनहेलेशनल एनेस्थीसिया. इनहेलेशनल में पेशेंट को थोड़ा कोऑपरेटिव होना पड़ता है. इस केस में डिसएडवांटेज बस ये है कि इनकम्प्लीट रिकवरी इमीडिएटली, इनएबिलिटी टू कंट्रोल लेवल ऑफ सेडेशन. अगर आपने एक गोली खा ली या आपने उसको दे दिया है तो आपका कंट्रोल नहीं उसके ऊपर है, जितना उसको इफेक्ट होना है तो ओवरऑल बॉडी की अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स के हिसाब से होगा. और उसके बाद आपने प्रोसीजर कर दिया तो आप चाहो कि इमीडिएटली पेशेंट रिवर्ट बैक कर जाए, तो ऐसा नहीं होता है. वो अपने हिसाब से उसका इफेक्ट वेन ऑफ होगा और पेशेंट का सेंसरी और मोटर स्किल वापस आएंगे. इसमें जो मोस्ट प्रेफरेबली दिया जाता है वो एल्ट्राजोलॉम है, 0.25 to 0.5 milligram, diazepam 2 to 10 milligram, lorazepam 1 to 4 milligram, triazolam 0.125 to 0.5 milligram. इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है. ट्राइजोलम भी काफी अच्छा सेडेटिव है या एंटी एंजाइटी ड्रग है. अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर एंजाइटी, बहुत एंशियस है, तो उस केसेस में आईवी दी जाती है. कई बार मेंटली रिटार्डेड पेशेंट भी जब ओवर हाइपर एक्टिव हो जाता है, उन केसेस में हम ये ड्रग्स देते हैं. तो दैट इज गिवन आईवी. बेंजोडाइजेपाम कैन बी यूज्ड टू अचीव ग्रेटर लेवल ऑफ सेडेशन. इसका एडवांटेज क्या है? ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ आईवी सेडेशन इज इमीडिएट. जैसे ही आपने दिया वैसे ही इफेक्ट आएगा. Level of sedation can be titrated. Formal training should be received by the operator as it is required by the law. ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना होगा कि हम इसको दे पाते हैं कि नहीं. अब हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया. अब वी आर रेडी फॉर द सर्जरी. अब रेडी फॉर द सर्जरी में हमें 2-3 चीजों का देखना है कि हमारा ऑपरेशन जेंटल और केयरफुल होना चाहिए. टिश्यू मैनिपुलेशन शुड बी प्रिसाइज, डेलिब्रेट एंड जेंटल. Thoroughness should be there. Roughness should be avoided. Otherwise, it may result into excess tissue injury. Post-operative discomfort होगा, delayed healing होगी और improper healing होगी. Scar formation हो सकता है. इसलिए जब हम इंसिशन देते हैं तो हम कहते हैं कहीं पे भी लैसरेशन नहीं होना चाहिए. हमारे MBA स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं, एट द टाइम ऑफ सर्जरी अगर वो लैसरेशन कर देते हैं तो चांसेस है कि वो स्टूडेंट कैंडिडेट फेल हो जाए. तो ये प्रिसीशन आपके पास होनी चाहिए. पेशेंट को आप जब सर्जरी कर रहे हैं तो आपको पेशेंट को हर समय देखते रहना होता है. उसका फेशियल एक्सप्रेशन आपको देना होता है कि कहीं उसको फेलर तो नहीं हो रहा है, पर्स्पिरेशन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, एंजाइटी में तो नहीं है, फेयर तो नहीं है. तो आपको यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन मॉनिटरिंग द पेशेंट एंड उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करके रखना होता है ताकि उसको कंफर्टेबल रहे. और ये एक एंजाइटी और फेयर ही है. अगर आपने प्रॉपर्ली और अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, वो अजीब सी चेहरे बना रहा है, इसका मतलब है आपका एनेस्थीसिया प्रॉपर नहीं है. आप फिर से उसको एनेस्थीसिया दो. और आपके इंस्ट्रूमेंट एकदम शार्प होने चाहिए. डल इंस्ट्रूमेंट होंगे तो आपको प्रिसीशन नहीं आएगा, आप टिश्यू ट्रॉमा करोगे, आप भी फटीग होगे और पेशेंट भी फटीग होगा, टाइम बढ़ जाएगा. इसीलिए एक शार्पनिंग स्टोन आपके टेबल पे रखना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट डल है तो इमीडिएटली शार्पन इट एंड देन प्रोसीड विद द प्रोसीजर. आपने फ्लैप रेस कर दिया, अब आपको उसकी स्केलिंग करनी है. पेशेंट को डिब्राइट करना है उस एरिया को. डीप पॉकेट है जो कि ड्यूरिंग फेज वन में भी हम वही काम करते हैं और सर्जिकल में भी यही काम करते हैं. फेज वन में जितनी चीजें छूट गई हैं वो केयरफुली देखो. आपका जो असिस्टेंट दूसरे साइड पे बैठा है जिसने रिट्रैक्ट कर रखा है वो दूसरे एंगल से देख रहा होता है. आपका पेशेंट यहाँ बैठा है, यू आर सिटिंग एट द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. आपको उस तरफ की मीजियल सर्फेसेस दिख रही हैं, राइट साइड की डिस्टल सर्फेसेस दिख रही हैं. आपको राइट की मीजियल नहीं दिख रही है और लेफ्ट की डिस्टल नहीं दिख रही है. जो आपका ऑपरेटर उधर बैठा है उसको उल्टा सब दिख रहा है, तो वो भी आपको बता सकता है कि यहाँ पे डिब्राइडमेंट छूट गया है, यहाँ पे डिब्राइडमेंट छूट गया है. तो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. देन इज हीमोस्टेसिस. अब आपने डिब्राइड कर दिया. अब ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग को आप कैसे चेक करोगे? ब्लीडिंग को चेक करने की क्यों जरूरत है? बिकॉज accurate visualization of the extent of the disease, pattern of bone destruction, anatomy and condition of root, ये देखना हमें जरूरी है. It provides clear view for debridement and also prevents excess loss of blood from the body. Intraoperative bleeding can be managed with continuous aspiration. suction लगा करके रखते हैं, नहीं तो आप प्रेशर दे सकते हो, गॉज लगा सकते हो वहां पे ब्लीडिंग चेक करने के लिए.
Unfortunately, the laceration of large to medium vessel is less because incisions near highly vascular areas such as posterior mandibular, जहाँ पे कि inferior alveolar या lingual arteries होती है, या mid palatal region, यहाँ पे हमारा यूजुअली हम इंसिशन को यहाँ पे अवॉइड करते हैं, इसलिए हमारे को बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं मिलती है जनरली. इफ अ मीडियम और लार्ज वेसल इज लैसरेटेड, तुरंत वहां पे हमें एक सूचर लगा देना है ताकि ब्लीडिंग वहां पे बंद हो जाए और हीमोस्टेसिस हो जाएगा वहां पे. और क्या मेथड हो सकते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए? कैपिलरी के लिए अगर आर्टरी है तो आपको सूचर करना ही करना है या गॉज लगाना है. अगर कैपिलरी की ब्लीडिंग अगर हो रही है तो आप एक कोल्ड प्रेशर लगा दीजिए, एक गॉज दीजिए, उसको ठंडे पानी में उसको मॉइस्ट करिए और वहां पे कस के लगा करके छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ब्लीडिंग चेक हो जाएगी. या आप अलॉन्ग विद द वेसो कंस्ट्रक्टर आप लोकल एनेस्थीसिया और दे सकते हैं वहां पे. एब्सॉर्बेबल जिलेटिन स्पॉन्ज दे सकते हो, ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज दे सकते हो. ये सारी चीजों से आप ब्लीडिंग को चेक कर सकते हो. अब आपने ब्लीडिंग चेक कर ली है, अब आपको वापस सूचर को वापस कंप्रेस करना है और इतना कंप्रेस करना है कि वो क्लोजली अप्रोक्सीमेट हो जाए अच्छी से. एक्सक्यूज मी, सॉरी. पेरिडोंटल ड्रेसिंग इसके आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया, सूचर कर दिया, अब पेरिडोंटल ड्रेसिंग देना है. पेरिडोंटल ड्रेसिंग या पेरिडोंटल पैक्स देते हैं. इन जनरल ड्रेसिंग्स हैव नो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी. ये बस प्रोटेक्टिव होता है, हीलिंग साइट को प्रोटेक्ट करके रखता है और सूचर्स को प्रोटेक्ट करता है. इट मिनिमाइजेस पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन एंड हेमरेजेस, प्रिवेंट सरफेस ट्रॉमा ड्यूरिंग मास्टिकेशन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पेन इंड्यूस्ड बाय कांटेक्ट ऑफ वुंड विद फूड और द टंग. तो ये हमारे पेरिडोंटल ड्रेसिंग का काम होता है. अब जो हम ड्रेसिंग देते हैं, पेरिडोंटल ड्रेसिंग पे आपको क्वेश्चंस कई बार शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सॉफ्ट, लेकिन इतना सॉफ्ट भी ना हो कि उसकी प्लास्टिसिटी ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बनी रहे, प्रॉपर अडेप्टेशन हम कर पाए, इधर फ्री फ्लोइंग भी नहीं होना चाहिए. ड्रेसिंग शुड हार्डन विद इन अ रीजनेबल टाइम, 2 to 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर अंदर हार्डन होना चाहिए. क्योंकि बहुत टाइम अगर लग जाता है फिर आप इतनी देर तक चेयर पर बिना रीजन के आपको पेशेंट को बिठाना है. आफ्टर सेटिंग द ड्रेसिंग शुड बी सफिशिएंटली रिजिड टू प्रिवेंट फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन. The dressing should have a smooth surface after setting to prevent irritation to the cheek and lip. The dressing should preferably have bactericidal properties to prevent excess plaque formation. Dressing must not detrimentally interfere with the healing. बड़ा ही न्यूट्रल सा मटेरियल होना चाहिए. दो तरह के होते थे पहले, जिंक ऑक्साइड यूजुनॉल पैक आया करता था, अब नहीं हम यूज करते हैं. वी यूज ओनली द नॉन यूजुनॉल पैक. नॉन यूजुनॉल पैक में मेटालिक ऑक्साइड, देयर इज नो यूजुनॉल. यूजुनॉल क्लोव ऑयल होता है, काफी इरिटेटिंग होता है, इरिटेंट होता है, इसलिए हीलिंग को भी थोड़ा सा डिले कर देता है, इसलिए हम यूजुनॉल वाले जो नहीं होते हैं वो यूज करते हैं. इसमें जो दो होते हैं मेटालिक ऑक्साइड और फैटी एसिड्स, ये कोपैक के नाम से आता है. एक साइनो एक्रिलेट्स भी होते हैं, बैरिकेड के नाम से आता है. टिश्यू कंडीशनर्स भी हम यूज कर सकते हैं एज अ ड्रेसिंग मटेरियल. कॉम्पोजिशन ऑफ कोपैक, जो नॉन यूजुनॉल है इसको कोपैक भी कहते हैं. जो कोपैक का कॉम्पोजिशन, इसमें दो ट्यूब्स होते हैं. एक में एक्सेलरेटर होता है जो पिंक कलर का होता है, जो एक येलो कलर का होता है वो लिक्विड पेस्ट टाइप का होता है. लिक्विड पेस्ट में बेसिकली लिक्विड कोकोनट फैटी एसिड होता है जो कि थोड़ा सा थिकन विद रोजिन होता है, और एक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट डाल देते हैं जो कि क्लोरोथाइमॉल होता है. और जो पिंक ट्यूब होता है मेन ये होता है जो कैटलिस्ट होता है. इसमें जिंक ऑक्साइड होता है, ऑयल होता है प्लास्टिसिटी के लिए, गम होता है कोहेसिवनेस के लिए, और एक लोरोथाइडॉल होता है जो फंजीसाइड होता है. तो जिंक ऑक्साइड हमारा एक्सीलरेटर या जो कैटलिस्ट है वो वहां पे है, बाकी सब चीजें उसकी एडिटिव्स हैं. बेसिकली ये जिंक ऑक्साइड होता है. और इसको कैसे लगाया प्रिपेयर किया जाता है, इसमें दो हम जब इसको इक्वल लेंथ ऑफ टू पेस्ट प्लेस्ड ऑन अ पेपर बैग, उसके बाद दे आर मिक्स्ड विद द वुडन टंग फॉर 2 to 3 मिनट अंटिल द पेस्ट लूजेस इट्स टैकीनेस. शुरू में अगर उसको देखोगे तो वो हाथ में चिपकता है, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट आप ये देखोगे उसको हम थोड़ा सा कोल्ड वाटर में भी डिप कर देते हैं सो दैट इट लूजेस द टैकीनेस फास्ट. और उसके बाद जब उसको हाथ में आप लेकर के उसको रोल बनाओगे तो वो कहीं पे टैकीनेस खत्म हो जाती है, एंड देन वी कैन प्रॉपर्ली apply it on the surgical wound site. So this ये strip ले लिया है. Strip of the bag is hooked around the last molar and pressed into the
प्लेस एंटीरियरली, ये हम एक तरफ से लगाना शुरू करते हैं, इस तरह से चले जाते हैं, बक्कल साइड से लगाया और पैलेटल साइड से भी लगाया, दोनों साइड से इसको लगा करके बीच में कंप्रेस कर देते हैं इंटरडेंटल एरिया में, सो दैट देयर इज अ इंटरलॉकिंग ऑफ द बैक एंड इट डजंट गेट रिमूव्ड, ये अपने से निकलता नहीं है, वहां पे स्टिक, बाकी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है जिसको कि हम माउथ में है, पेशेंट ने खाना भी खाना है, एवरीथिंग इज देयर, तो बस वो इंटरडेंटल एरिया की इंटरलॉकिंग की वजह से ये लगा रहता है। समटाइम देयर आर इडेंचुरस एरिया, तो इडेंचुरस एरिया में भी हम इसको पूरा कवर कर देते हैं बक्कल से भी लिंगुअल से, और यहाँ पे ये आपस में अप्रोक्सीमेट हो जाता है बक्कल साइड से लिंगुअल साइड से। नाउ वी हैव गिवन द बैक, इसके बाद हमें पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस आप नॉर्मल एक्सट्रैक्शन के केसेस में भी देते हो, सर्जरी के भी केसेस में देते हो, मोर और लेस वो सेम होते हैं। पेशेंट को आप पेन किलर बताते हो, पैरासिटामोल हो सकती है, आइबुप्रोफेन हो सकती है, डाइक्लोफिनाक हो सकता है, तो एवरी 8 आवर्ली या 6 आवर्ली डिपेंड की उसकी क्या बायोअवेलेबिलिटी है। एस्पिरिन नहीं लेना होता है, एस्पिरिन पेशेंट, कार्डिक पेशेंट एस्पिरिन ले रहे होते हैं, एस्पिरिन को मना करते हैं हम, क्योंकि दैट इज द एंटीकोगुलेंट, सो ब्लीडिंग थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकता है या एनहांस कर सकता है, इसलिए एस्पिरिन को हम नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। इफ द पेशेंट इज टेकिंग सम इकोस्प्रिन, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना लेता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बैक के ऊपर ब्रशिंग नहीं करना होता है दूसरे साइड पे, वो भी नेक्स्ट डे से दूसरे साइड पे आप ब्रशिंग पूरा कर सकते हो, जिस साइड हमने पैक दिया है वहां पे या फुल माउथ में हम क्लोरहेक्सिडिन का माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, रिंस करना होता है, गार्गल नहीं करना होता है, सिंपली दे हैव टू होल्ड इट इन द माउथ एंड देन स्पिट, normal plaque control technique can be resumed. So these are the post-operative instructions. Uh, since I want to keep this short, I will not proceed too much. Basically, जो गोल होता है सर्जरी का ये होता है to gain access for root preparation, नॉन सर्जिकल मेथड्स जहाँ पे इनफेक्टिव हो जाते हैं वहां पे हम सर्जरी करते हैं, तो एस्टैब्लिश फेवरेबल जिंजाइवल कंटूर, अगर गड़बड़ हो गया तो वो हम करते हैं, फैसिलिटेट सेल्फ परफॉर्म्ड ओरल हाइजीन, पेशेंट खुद से ब्रशिंग करके प्लाक को मैनेज कर पाए, इसलिए हम थोड़ी सी पॉकेट डेप्थ का रिडक्शन भी कर देते हैं सर्जरी में। कभी कभी हम लेंथन द क्लिनिकल क्राउन टू फैसिलिटेट एडिक्वेट रेस्टोरेटिव प्रोसीजर, लाइक क्राउन देना है या फिलिंग करना है, टू रिगेन लॉस्ट पेरिडोन्शियम यूजिंग रीजनरेटिव अप्रोचेस, इसके लिए सर्जरी करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द एम ऑफ द सर्जरी। एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका कुछ पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दूसरी स्लाइड पे आ गए हैं। पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन में हम ये भी देते हैं कि हॉट फूड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर, ट्राई टू च्यू ऑन द नॉन ऑपरेटेड साइड ऑफ द माउथ, सेमी सॉलिड फूड लेना चाहिए, अवॉइड अल्कोहल, सिट्रस फ्रूट और जूसेस, स्पाइस फूड, और कोई एडिशनल फूड सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है, लोग वाइटामिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, विटामिन सी, बी, ये सब कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट अगर नॉर्मल डाइट ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्मोकिंग तो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। पेशेंट को बता देना होता है कि स्वेलिंग इज वेरी नॉर्मल, थोड़ा स्वेलिंग होगी। अब जहाँ पे हमने सर्जरी करी है, ड्यूरिंग द फर्स्ट डे यू कैन आस्क द पेशेंट टू अप्लाई आइस इंटरमिटेंटली ऑन द फेस ओवर द ऑपरेटेड एरिया, तो उससे स्वेलिंग थोड़ी कम होगी। ओकेजनली ब्लड में बी सीन इन द सलाइवा फॉर फर्स्ट 4 to 5 आवर, दिस इज नॉट अनयूजुअल, इट विल करेक्ट इटसेल्फ, पेशेंट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। That should remain in place until it is removed in the office at the next appointment. हम usually after 7 days हम उसको remove करते हैं। So basically the conclusion of this overall presentation is कि surgery हम करते हैं to prevent, periodontal therapy is directed at disease prevention, slowing or arresting disease process, regenerating lost periodontium, maintaining achieved therapeutic objects, ये हमारा aim होता है इस पूरे सर्जरी का। लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए हमको पेशेंट को किस किस स्टेप पे कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, प्री सर्जिकली क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग सर्जरी क्या ध्यान रखना है, पोस्ट सर्जिकली क्या ध्यान देना है, ये सबको ध्यान में रखते हुए ये आपका टॉपिक मैंने कवर किया है। दीज आर द रेफरेंसेस। आपका रंजा जो हमारी मैंने इसमें 10th एडिशन लिखा है, वी हैव 11th एडिशन, 12th एडिशन, 13th एडिशन, आप कहीं से भी इसको ले सकते हो। वहां से आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ पेरिडोंटल सर्जरी बहुत ही प्रॉपर्ली लिखा हुआ मिल जाएगा, यू कैन रीड इट
from there and understand it. And if you have any problem, you may ask the question anytime in the clinic. Thank you very much.